Good morning students. Today we will start the chapter number 10, the beggar, from our book Moments. So let's start with the introduction part of this chapter. So the beggar is written by Anton Chekhov. The beggar is a short story by Anton Chekhov told with realism and restraint. Today he is recognized as one of the most important writer of the world of plays and short stories. The story is about a prosperous advocate, Sherji, and a beggar, Lashkov. The advocate is a kind man. He helps the depraved beggar to come out of his miserable life and live like a respectable person. But in the end, he discovers that he was not the actual benefactor, but his ill-tempted cook, Olga, was the one who actually transformed the beggar into a nice man. So, Sherji was a well-to-do advocate. One day he met a beggar. His name was Lashkov. He was wearing a fawn-colored, tattered overcoat. He had dull, drunken eyes. He had red spot on either cheek. The beggar said that he had been a village school teacher, but he had lost his job. He had no money, and so he was forced to beg. Sherji recalled that he had seen the beggar the other day in another street. There he said that he had been a student who had been expelled. He was angry with the beggar for telling a shameless lie. He threatened to call the police and have him arrested for trying to cheat people. For a while, the beggar stuck to what he had said, but soon he broke down. He admitted that he had been telling lies to make people pity on him. In fact, he had been a singer in Russian choir. He was a drunkard and had been dismissed. Now he had no work to do and no way to support himself. He lived by begging. Sergey told him that he must work to earn a living. Lashkov pleaded that he was willing to work, but no one offered him any work to do. Sergey asked him if he would chop wood for him. Lashkov had to say that he would. Sherji called his cook Olga. He told her to leave Lashkov to the woodshed and let him chop wood. Lashkov followed Olga unwillingly. In fact, he had never meant to chop wood, but he had been trapped by his own words. Sherji hurried into the dining room. From there, he watched the cook leading the beggar to the woodshed. She opened the door of the woodshed. She flung an axe down at his feet. He lifted the axe and hit a piece of wood irresolutely. It was a feeble effort. Sherji was sorry to have set that menial work to that drunkard beggar who was not fit for the work. He came back to his study. After an hour, Olga came in. She told Sergey that Lashkov had chopped the wood. Sergey was pleased. He gave her half a ruble for Lashkov. He said that if Lashkov desired, he could come to chop wood on the first of every month. Lashkov came to chop wood regularly on the first of every month. He was always given work and he earned a little money every time. When Sergey moved into the another house, he asked Lashkov to help in packing and hauling the furniture. He hardly did anything. He walked behind the wagons, hanging his head, but Sherji believed that he had done his job well. He gave Lashkov a ruble. Lashkov knew how to read and write. Sherji gave him a letter and asked Lashkov to go to a friend who would give him some copying work to do. Lashkov went away. He never came back again. 2 years passed. One evening, Sherji saw Lashkov at the ticket window of a theatre. He was well dressed. He was buying a ticket. He told Sherji that he was a notary and not got 35 rubles a month. Sherji was delighted because he had been able to push a depraved beggar on the right path. Lashkov thanked him for his kindness because he had pulled him out on a sinking pit. But he said that the true credit for changing him went to Olga. Naturally, this surprised Sergey Lashkov.
explained that he had never chopped a single piece of wood. Olga chopped the wood for him and gave him the money. She would chide him. She would tell him that he would go to hell. There was no hope for him. She wept for him. She suffered for him. Her words, her sacrifice, and her suffering for him had an inexplicable influence on him. He began to change. He stopped drinking. He was grateful to her. He could never forget her. तो इस कहानी का जो शीर्षक है वो है भिखारी। इसमें शेरजी एक धनी एडवोकेट था। एक दिन उसे एक भिखारी मिला। उसका नाम लश्कोफ था। वह हल्के पीले भूरे रंग का फटा हुआ ओवरकोट पहने हुआ था। उसकी मंद और शराब के नशे में मदहोश आंखें थी। उसके गाल पर एक लाल निशान था। भिखारी ने बताया कि वह स्कूल शिक्षक था। उसकी नौकरी छूट गई, लेकिन उसके पास धन नहीं रहा, इसलिए उसे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। शेरजी को याद आया कि एक दिन इसी भिखारी को उसने किसी दूसरी गली में देखा था। तो उसने ये बताया कि वह एक विद्यार्थी था, उसे स्कूल से निकाल दिया गया। तो वह भिखारी पर बहुत क्रोधित हुआ और उसने बेशर्मी से ऐसा झूठ बोला था। तो उसने धमकी दी कि वह पुलिस को बुलाएगा और लोगों को धोखा देने के प्रयास में उसे गिरफ्तार करवाएगा। कुछ क्षण बाद भिखारी ये सोचता रहा जो वह कह चुका था, लेकिन जल्द ही वह फूट फूट कर रोने लगा और उसने स्वीकार भी किया कि लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए वह लगातार झूठ बोलता आ रहा था। सत्य बात तो यह थी कि वह रूस की गायन मंडली में एक गायक था तथा शराबी होने के कारण उसे बाहर निकाल दिया गया था। अब उसके पास पेट भरने के लिए कोई काम नहीं था। वह भीख मांगकर गुजारा करता था। शेरजी ने उससे कहा कि वह रोजी रोटी के लिए उसे काम करना चाहिए। लश्कोफ से याचना की कि वह काम करना चाहता था, परंतु उसे कोई काम नहीं देता था। तो शेरजी ने कहा क्या वह उसके यहाँ लकड़ी काटने का काम करेगा? तो लश्कोफ को कहना पड़ेगा कि वह करेगा। शेरजी ने अपने रसोइया ओल्गा को बुलाया और लकड़ी रखने वाले स्थान पर ले जाकर लकड़ी कटवाने के लिए कहा। लश्कोफ अनिच्छा से ओल्गा के पीछे पीछे चला। सच तो यह था कि उसका आशय लकड़ी काटने का नहीं था, परंतु वह अपने ही शब्दों के जाल में फंस गया था। शेरजी शीघ्रता से भोजन कक्ष में गया। वहां से वह ओल्गा को भिखारी का मार्गदर्शन वुडशेड की ओर करते हुए देखा। ओल्गा ने वुडशेड का दरवाज़ा खोला और उसके पास पैरों के पास एक कुल्हाड़ी पटक दी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और अनिश्चितता से लकड़ी के एक टुकड़े पर प्रहार किया। यह एक बहुत कमज़ोर प्रयास था। शेरजी को यह सोचकर अफसोस हुआ कि ऐसे शराबी भिखारी को इस तरह का छोटे स्तर का काम नहीं देना चाहिए था। वह उस कार्य के लिए सर्वथा अनुपयुक्त था। वह अध्ययन करने के लिए वापस आ गया। 1 घंटे बाद ओल्गा अंदर आई। उसने बताया कि लश्कोफ ने लकड़ी काट दी थी। शेरजी प्रसन्न हुआ। ओल्गा को आधा रूबल लश्कोफ को देने के लिए दे दिया। अब उसने ये भी कहा यदि लश्कोफ को लकड़ी काटने की इच्छा हो तो वह हर महीने की 1 तारीख को आ सकता था। लश्कोफ हर माह की 1 तारीख को नियमित रूप से आने लगा। उसे काम दिया जाता था जिससे वह हर बार कुछ धन कमा लेता था। अब शेरजी एक दूसरे मकान में गए तो उन्होंने लश्कोफ को सामान बंधवाने और फर्नीचर को खिसका कर रखवाने में सहायता करने के लिए कहा। अब उसने कुछ नहीं किया। वह मुंह लटकाता हुआ सामान को ले जाने वाले मालवाहक गाड़ी के पीछे पीछे चला गया। अब शेरजी को विश्वास था कि उसे अपना कार्य अच्छी तरह से पूरा कर लिया। उसने लश्कोफ को 1 रूबल दिया। लश्कोफ पढ़ना लिखना जानता था। शेरजी ने उसे एक पत्र दिया और उससे कहा कि वह उसके मित्र के पास चला जाए जो उसे नकल करके लिखने वाला कार्य दे देगा। लश्कोफ चला गया। फिर वह दोबारा कभी वापस नहीं आया। 2 साल बीत गए। एक शाम को शेरजी ने लश्कोफ को एक थिएटर के टिकट घर के सामने देखा। वह अच्छे कपड़ों में था। वह टिकट खरीद रहा था। उसने शेरजी को बताया कि वह अब एक नोटेरी था। उससे एक माह में 35 रूबल मिलते थे। शेरजी ये जानकर बहुत खुश हुए कि उन्होंने एक भ्रष्ट भिखारी को सही रास्ते पर लाने में सफल रहे। लश्कोफ ने उसकी इस दयालुता के लिए धन्यवाद दिया क्योंकि उसने एक डूबते हुए गड्ढे से बचाया था, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसमें बदलाव लाने का श्रेय ओल्गा को जाता है। वास्तविक बात तो ये थी जिस बात ने शेरजी को काफ़ी हैरान कर दिया। लश्कोफ ने बताया कि कभी भी उसने एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं काटा। ओल्गा उसे लकड़ी काटती थी, उसे धन देती थी और उसे डांटती रहती थी और उससे कहती थी कि वह नर्क में जाएगा। उसके लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। वह उसके लिए रोती थी। उसके लिए उसने काफ़ी कष्ट झेले। ये बातें, उसका त्याग और उसके लिए जो उसने कष्ट झेले, उन सबका इस पर इतना प्रभाव पड़ा जिसका वर्णन भी हम नहीं कर सकते हैं। उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया और उसने शराबखोरी बंद कर दी। इसके लिए वह काफ़ी आभारी था और उसे कभी भुला भी नहीं सकता था। सो दिस वॉज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड समरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. द टेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर we will continue with the next video. If you have any doubt or any confusion in this part, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.